रुकेंगे नहीं रुकेंगे, सबको स्वस्थ करेंगे, पूरा स्वस्थ करेंगे, नहीं थमेंगे नहीं थमेंगे, अब ठान लिया है, मंजिल पाके रहेंगे। Welcome back. We are continuing to discuss the big game changers in health in the last 75 years. We are joined by Suchitra Ella, co-founder and joint managing director, Bharat Biotech, Padma Bhushan awardee. And continuing with us, we have Dr. Chandrakant Panda, founding member, International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, Padma Shri awardee, and Dr. Dilip Mavalankar, director, Indian Institute of Public Health, Gandhinagar. Mr. Bachchan, would you have a question to ask Ms. Ella? I just wanted to ask Suchitra ji, there was a great effort that went into making these vaccines, particularly for children, and how important it became for immunizing kids, despite the fact that we never had this vaccine earlier on. Yes. And after many attempts, and how wonderful to see that somebody in India was able to do that. Bachchan ji and all the eminent panelists on the panel, a very good morning to you. Namaskar. India has been a forerunner in vaccinating her own children in the past several decades. We have started off with polio, and several other vaccines have come into play into the universal immunization program that is run under the Government of India, Ministry of Health, which continues to serve the entire nation across all states under the public healthcare system. India's vaccine prowess has been there because the public institutes existed in India in places like even Himachal Pradesh and Kasoli and in Kunnur in Tamil Nadu. There were the previous generation of vaccines, though in smaller doses and volumes and quantities, were manufactured in India. But when our population grew beyond the levels of where we are, the 1 billion plus, the second generation vaccines had to be deployed in order to bring about large scale manufacturing. We ourselves, Bharat Biotech today has been 25. We came to India, back to India when India was 50 from the United States. Krishna and I, our first generation entrepreneurs, chose to return to India in order to set up a life sciences and a vaccine and a biotechnology company, which was based on research, development, and innovation, and creating IPR for the country and thereby manufacturing new vaccines for our children and adults at large. Because indigenous vaccines bring competitiveness to the scale at which we have to manufacture. The vaccines available in the rest of the world, especially in the Western world, are very expensive for countries like ours, especially the developing countries. Though now I do agree, I don't want to call India a developing country anymore, but we are the fifth largest economic powerhouse in the world and rising so. But still, 25 years ago, or 2 decades back, or 10 years to 1 decade back, we still had this huge challenge. So competitiveness is important, scale is important, quality is of course important because we have to play with international quality norms that exist from the WHO and other international agencies. So India's vaccines have been the engagement for us right from the start as a new generation company, entrepreneurs. We have stood for innovation. We have stood for development of products. We have stood for creating new vaccines. And that's how came rotavirus. Amitabh ji and Pranav Roy ji, all of you would remember, India became the third country in the world, and rotavirus vaccine was the first vaccine fully developed under an Indo-US partnership program, which was existing prior and then was funded by large
funding agencies from around the world, such as the Gates Foundation, and both the governments facilitated, the Indian government and the US government facilitated this growth, this development process of this vaccine. Thereby, we stand today as the third country in the world to make a rotavirus vaccine. We were losing 200,000 children to the rotavirus infection alone because of our lack of hygiene and lack of health systems in the deeper pockets of our country. And this because it led to serious dehydration and death in the children. So this is now slowly getting reversed because we have our own indigenously made vaccines. So rotavirus has set the stage for us, especially in the year 2015, when the Honorable Prime Minister launched the vaccine and announced it to the country and to the world at large that India becomes the third developer and manufacturer of a rotavirus vaccine. So it's extremely important that these vaccines, which are very important in the preventive days and the formative years of the children, the children have to be protected. Viruses such as these are extremely, as we all know, are extremely, I would say, dangerous. And the mortality rate is extremely high in many of them. The rabies vaccine, the rotavirus vaccine, the hepatitis B vaccine, and of late the Covaxin, which has also come into play, which we were absolutely unprepared as a world to tackle this pandemic of this size at this point of time. But I think as vaccine manufacturers, we have stood up to the call of the nation, to the call of our people, and to enable that our own vaccines be deployed. We partnered with the Indian Council of Medical Research in order to get the strains, because we needed the SARS-CoV-19 strains from a government, from a laboratory, which is the National Institute of Virology in Pune, that researches and does a lot of pioneering work in the field of viruses. So we reached out to the ICMR so we could get the live strains which were transported. This is a storybook kind of a story that I'm sharing with you today. No, in fact, we're going to be talking about that. We wanted to talk to you about that. So like Suchitra ji just said, Dr. Mavalankar, I would like to ask you here, we've understood the importance of vaccination, especially for children, and we have made there's been a significant improvement when we talk about immunization. But unfortunately, only 65% of children in India have received full immunization during the first years of their life, which is very critical. Dr. Mavalankar, when we talk about achieving the SDG goals, the Sustainable Development Goals, tell us how can we achieve this and make it 100%, because immunization is key for every child. Yeah, I think very important, because immunization, the making of vaccine is the starting of the story. But reaching this vaccine to each child throughout the India through 5 lakh villages and many more settlements is a logistical, I should not say nightmare, but a major exercise. And of course, we are good at it. We have delivered these vaccines in the COVID times. But as happens, when emergency is there, we are ready to fight. When the war is there, everything is galvanized. But in routine vaccination or routine health programs, sometimes we slack off. Plus, the community also has to have continuous, lessons by Amitabh Bachchan ji and many more, that vaccination is life-saving. Not only polio, but he said about hepatitis, and now there are many more vaccinations, because preventive activities, you don't see the result immediately. आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है, ठीक हो जाता है, डॉक्टर भगवान है. बट जो ANM नर्स, आपका बच्चा खेलता है, कूदता है, उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको आगे में न होने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं, बच्चा रोने लगता है, एक दिन उसको तकलीफ होती है, तो माँ बोलती है कि ये क्या है. So we have not been able to sell our public health, because our public health cadre is very weak. You might be surprised that we don't have a national public health cadre. Our nation also doesn't understand what is public health. They think it is doctor's job
Public health is a multidisciplinary cadre. We need health educators, we need actors, we need lawyers. Our public health laws are the ones which Britishers gave us. So we need a long walk on this path to strengthen our public health system. So if we strengthen our public health system, including communication, because finally it is a voluntary acceptance of the vaccine by each family, each mother, father, father-in-law, mother-in-law, grandmother, that will allow each child to be given vaccine. We have the logistic systems almost. The workers are going, but if people refuse, they cannot be forced. So we have to have the equal amount of educational effort which we put in polio, then we will reach everywhere. And if you take the example of family planning, we were really Vishwa Guru, the first government to start any government family planning program in 1952. No other government, not even America, England had family planning government program. We were the Vishwa Guru. That time, there were 6, 7 children being born to each woman. Now there are less than 2 children. That is an untold success story, as is the vaccination. And if more children die, families want more children. So the vaccination and child survival helped our family planning program. Lastly, I want to emphasize that another untold Vishwa Guru story is one of the very early and very transformational liberalization of abortion as a women's right almost issue. We liberalized abortion services in 1971, 1 year before Sweden did. So in abortion, we were 1 year before Sweden. So in some sense, in many public health areas, we have been the torch bearers of global change. Even in tobacco, smoking, you might be surprised. We always see China is always better than India. But smoking control, India is much better than China. China has much worse record than, but nobody knows, nobody talks. If you see Indian tobacco packet, it has a big warning with a pictorial warning, whereas Chinese packets don't have. So we have many things. This is a very important point that you made about abortion. I mean, only recently the Supreme Court has given a landmark judgment on, and when you juxtapose this with what happened in the United States, then you realize that there's so much to celebrate back home. But quickly coming back to Suchitra Ella, Suchitra ji, you see now with that heat and the focus and the strobe lights not on COVID as much as they were in 2020 and 2021, what is the role of the vaccine and the vaccination process now? It picked up, but where is it now and where does it need to go? See, the country has, as we have all worked under a time pressure cooker kind of a situation it was. It's dreadful thinking of the last 2 years when we were developing the vaccine, when the strains came from, I stopped earlier by saying that the strains had to come by road from Pune because we were under the lockdown 1.0 and our own vehicles went and our own senior biotechnologists had to be sent along in the car. Imagine traveling to Pune from Hyderabad. I wouldn't be sitting here today in front of you, but for my colleagues in the entire team across 4 states, our teams have been partnering and working and collaborating through this pandemic. Ignoring the pandemic conditions, the lockdown conditions that we were all under. After all, everybody's, everyone's life is precious, including the operator who has to go into our facilities and turn on the machines and the bioreactors that are there, where the virus cells are growing day in and day out as I speak to you. The vaccines that we have catered to in the country has crossed the 200 crore mark. We have completed the adult populations. The booster doses are going on. And this is where I go back to the point made by the earlier speaker that the
public and the community has to also understand the value of vaccination, because in many a times, even in children's vaccination, we all know that our own children, our own grandchildren, we take them to the doctors, the pediatricians, where the booster dose is given, which is the third dose. In some cases, there is also a fourth booster dose. But what I mean to say is the booster dose plays the most important role in completely, boosting that immune system that our bodies and our immune system response that has to be built in our own individual systems, because we are all different. We do not follow, I don't think as a country we can take this chance by saying that, no, I took 2 doses and that's enough for me and I'm fine, I'm not infected again, I'm very hale, I'm healthy, I go to the gym and I have healthy lifestyle. All that is good. That will just add to our immune responses and the antibodies that need to be created in us. But I think that booster dose is important. Yes, of course, Suchitra ji, sorry for interrupting. Absolutely. I think the points which you've made are absolutely important, and we need to build up our immunity. Prevention is definitely better than cure. Thank you all so much for joining us. Moving on, ASHA workers or the accredited social healthcare activists are on the front line on the battle in our country. But let's see what are the challenges they have, what goes on in their lives, in their daily lives. In fact, during the pandemic, it was these women, these ASHA workers, who didn't worry about their own health, but they went ahead and took care of each and everyone, ensuring that everybody is vaccinated. So let's take a look in their life. It's 8 in the morning and all across India, more than 1 million ASHA workers like Miranda Devi, Rehmat and Rukkam Kumari are going to work as community health workers. These ASHA workers are the bedrock of India's primary healthcare system, travelling distances long and short, delivering healthcare to even the smallest and most distant communities. One of them is Ranjana Dwivedi in Rewa district, who travels by boat to get to Gurguda village, for which she is the sole ASHA worker. This morning, Ranjana is visiting a new mother to check on her newborn and deliver medicines. In the first month after delivery, ASHA workers will make at least 5 to 6 home visits to check on the health of the mother and her infant. The aim of these constant follow-ups, especially with low-weight babies, is to bring down maternal and infant mortality rates, which is a main focus area for ASHA workers. Another crucial focus area in the last 20 months has been battling misinformation and persuading people to get vaccinated against COVID, something Rukkam Kumari is doing this morning on her way to the Anganwadi Center in Mundiari, Bihar. कोवैक्सीन है ना? कोवैक्स है, प्रोवैक्स है और कोविशील्ड है। कहाँ पर? आंगनबाड़ी पर। ASHA workers like Miranda Devi at the Awang Babagai Health and Wellness Center in Imphal perform a wide array of health services, from administering medicines, vaccines and first aid to maternal and infant care, sanitation and hygiene, and providing advice and care for every primary healthcare need possible. ASHA workers are the first and sometimes only point of contact for millions of villagers and the healthcare system. ASHA workers like Ranjana and Rehmat carry zinc, iron folic acid and other pediatric tablets to address issues like anemia and vitamin deficiency in children under 5, another key focus area. It has been a busy morning, but the day has just begun. India's 1 million ASHA workers are on the move. By the afternoon, it is time for them to go on their rounds. In Uttar Pradesh's Bharaich, Saraswati Shukla goes door to door to inquire after the villagers' health, while in Bengaluru, K.A. Rehmat visits nearly 500 houses of the GD Mara slum every day, providing information, collecting data, writing reports, keeping track of immunization schedules and a lot more. 3,500 kilometers away in Imphal, Miranda Devi has come to check on a frail senior citizen who isn't feeling too well. Miranda Devi checks her vitals and leaves her some ORS. She will visit again tomorrow. ASHA means hope, and back in Mundiari, Bihar, Rukkam Kumari is bringing hope to her community in more ways than one. Rukkam is ASHA worker by morning and teacher by evening. She hopes to address one of her biggest challenges, lack of awareness and education amongst the adults, by focusing on the younger generation.
That then truly is the sound of Asha, of hope. We've just talked about the 10 of the biggest game changers in health in 75 years. The 11th one are India's 1 million ASHA workers, the accredited social health activists. They are the first and very often the only contact for resolving health issues in India's villages, slum and remote areas. How can we empower them so that they can be more effective in doing their job, which is looking after the health of India? Joining us now we have with us Bachchan, the Chief Advisor cum Mentor, the Coalition for Food and Nutrition Security. We have Ravi Bhatnagar, Director, External Affairs and Partnerships, SOA Reckitt, Dr. Komal Goswami, Chief of Party Plan India, actor Sonu Sood, who has done incredible during the pandemic and continues to support frontline workers like our Asha Didis on the ground. And of course, we have again with us, joining us, who joined us earlier also during the finale, Matilda Kullu. She's an Asha worker from Odisha who's also on the Forbes list. Thank you all so much for joining us. Thank you. The first thing I think what we should start with, Sonu, you've worked on the ground during the pandemic, and even with ASHA workers, you recently met them, you gave them cycles, because they really are the point of contact on ground, who are working in the interiors, and access is a huge issue. Tell us about it when you meet them, when you work with them. What do you think really the challenges are still? I feel blessed that I know ASHA workers from many regions. I remember when I connected with them in Kopargaon, in a place close to Shirdi. The biggest challenge they used to face was that they didn't have any means to go to different places. They used to travel kilometers to reach out to these places, and I remember, they said, we feel like sometimes just the data collectors, that we go to their houses, we see, which family needs what thing, but we don't have a solution to that. We can just provide those information to the government, and then we have to wait for those medicines, or sometimes, it doesn't reach on time. So again, when we go back to their families and, we don't get the kind of treatment, they said, you took whatever information you wanted, but we still didn't get what was required. So I think that's what the biggest challenge I could see. Traveling again was one major problem they faced, but I really want to thank them, because the kind of network they had, and that also really helped me during the pandemic, because wherever we wanted to reach out to the needy families, whether to send them oxygen concentrators or medicines, ASHA workers were one point which helped us reach out to them. In fact, absolutely, we have Matilda ji with us. Matilda ji, आप 15 साल से आशा वर्कर का काम कर रहे हैं, आप फोर्ब्स के लिस्ट पर भी आए हैं, और खासकर जो आपका काम है, जो हम बात कर रहे थे, मदर और चाइल्ड, उनके लिए काम करते, थोड़ी बता सकते कि किस तरह का आप काम करते हैं और कितना ज़रूरी है ताकि हर बच्चे और माँ की सेहत सही रहे? हम पहले काम करते थे जिस इरादे से हमको सिलेक्शन किया गया, जिस स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़रूरी था एक माँ का और एक बच्चा का केयर करना, उसको सेफ डिलीवरी करवाना, वो होता है बच्चा और माँ का सबसे ज़्यादा केयर करना उस टाइम। तो हमको इसीलिए कि हॉस्पिटल डिलीवरी करवाना था, उसको मोटिवेट करना है। जैसे होम डिलीवरी करने से सबसे ज़्यादा माँ का और बच्चा का नुकसान होता है। कभी कभी बच्चा घर में मर जाता है, जैसे डिलीवरी हुआ, लेट से डिलीवरी हुआ या तो सडनली बच्चा का कोई कॉम्प्लिकेशन दिखा तो वो मर जाने का डर होता है। उस टाइम हड़बड़ी में हम हॉस्पिटल ले जाए अगर, तो उसमें उसका डेथ होने का डर सबसे ज़्यादा होता है। अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी किया गया तो वो साथ ही साथ उसमें अवेलेबल होता है कि एक बच्चा का केयर करना, उसको वो फैमिली को और माँ बाप को समझाना पड़ा। उसके बाद माँ का ऐसे कॉम्प्लिकेशन आता है, सडन मर्की होना, मर्की वो बीपी हाई हो जाता है और मर्की भी होता है, उसके बाद ब्लीडिंग होना, ये उस टाइम का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हॉस्पिटल में ये चीज़ को हम रोक सकते हैं। हॉस्पिटल में अगर पहले से उसको एडमिट किया तो उसको हमको मोटिवेट करना था कि जो अभी रेट है हम लोग का डेथ का रेट, उसको कैसे आप सेव हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जाने से आप कैसे सुरक्षा पा सकते हैं। यही चीज़ एक माँ और उसका फैमिली को समझाना था, वो चीज़ हम लोग किए।
आशा वर्कर का पहला काम वही था। इसीलिए हम जब आशा वर्कर का सिलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा उसी को फोकस किया गया, तो उसके ऊपर हम काम करने लगे और शायद हम सक्सेस भी हुए। हमको खुशी लगता है कि हम 100% अभी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा सकते हैं, और जो माँ का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो उसको सिजेरियन करना पड़ता है। सिजेरियन क्या होता है उसको समझाए और उसका सेफ डिलीवरी करवा पाए। और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट आशा वर्कर आने के बाद वो हॉस्पिटल जाकर अभी डिलीवरी करवा सक रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वही सबसे बड़ी चीज़ है कि कितने डेथ्स कम हो गए हैं मदर्स के। मैं रवि आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप रैकेट के बारे में बता सकें कि हमने कई कार्यक्रम किए और हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप विस्तार से दर्शकों के लिए बता दें कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ आपका किस तरीके का एसोसिएशन रहा है। So Sanket, through Detol Banega Swasth India program, initially, like, you know, when we started, we were in around 5 districts in India, 8 seasons back. When now we see we are in all 100 plus aspirational districts in India. We have not left a single district. We are in Arunachal to we are there in Leh to we are there in Punjab to the places wherever we are needed. And we are training a big cadre of around 100,000 frontline health workers, because the trainings are done at such a long gaps. वो गैप को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेनिंग गैप कैसे कम होगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो सकता है। अगर एक बेसिक क्वेश्चन है कि जेड स्कोर चेक करना है बच्चे का कि सीवरली मालनरिश्ड है, तो आशा, आंगनवाड़ी, मल्टीपर्पज़ वर्कर, कई बार जो नर्सेज हैं वो भी जेड स्कोर कैलकुलेट नहीं कर पाती। तो इसके लिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई को कैसे यूज़ करना है, तो वो फ्यूचर लुकिंग जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर जो ट्रेनिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ फंडामेंटल्स और बेसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन वगैरह। आज भी अगर देखते हैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हेल्थ मिनिस्ट्री ने फाइल किया रिस्पॉन्स कि मैक्सिमम जो डेथ्स हो रही हैं अंडर 5 जो बच्चों की डेथ्स है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। वन ऑफ द मेजर रीजंस उसके पीछे भी है हैंड वॉशिंग एक्चुअली। और इफ WHO 7-point प्लान इज नॉट यूज्ड वेल एंड इफ द फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का ट्रेनिंग नहीं होगा WHO 7-point प्लान पे, तो चांसेस है कि हम वहीं पे ही खड़े रहेंगे जहाँ पे हम खड़े हैं। और हर स्टेट अलग अलग वेरी करता है। वेस्ट बंगाल अलग है हेल्थ वर्कर्स का ट्रेनिंग में, उत्तर प्रदेश अलग है, उड़ीसा अलग है, लेह अलग है और उत्तरांचल अलग है। इम्पॉर्टेंट है कि कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स बने, जैसे ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं एक्रीडेशन के, उसी तरह से एक्रीडेशन हो ट्रेनिंग्स का भी। और ऐसा नहीं हो कि रैंडमली कोई भी आके ट्रेन करके जा रहा है, तो वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संकेत। एंड वी आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम लास्ट 8 सीजन्स एटलीस्ट आई कैन से। बसंता जी, आपसे पूछना चाहूँगा, you are known as the nutrition man of India, and you've done such creditable work with the ASHA workers. But actually it's also seen that a lot of the ASHA workers themselves are malnutrition. How do you deal with that? Yeah, I think you asked a very, very important question. It is a paradox. One way they are going to promote the best nutrition and health messages, at the same time large number of them are also malnourished. Look into National Family Health Survey data. Anemia is around 65% in India among women. In many districts, it is more than 70%. And micronutrient deficiency like zinc deficiency, vitamin A deficiency, iron deficiency is all pervasive. So large number of ASHA workers who are just nutrition warrior and health warriors at the village, they themselves are malnourished or having poor health. I think we need to deal that fast. They should be the real inspiration and positive deviant. Whenever you see one ASHA worker at the door front, you should see them really inspiring through their non-verbal cues, and non-verbal cues can happen if they are also well nourished. So I think the government and the civil society should invest more so that the anemia mukt Bharat में जो mandate है, they should be free from anemia fast. That is number one. Number two, micronutrient deficiency is all pervasive, so it is creating morbidity and mortality in many cases. They should be given dietary supplements
their incentives should be such that they should be able to get diverse diets, and also they should be able to get nutrition-rich fortified food or supplements, so that they themselves are positive deviants and become an inspiration for others to promote healthy messages and good nutrition behavior messages. Yeah, absolutely. Only if they are healthy, I think they can take that message forward. They'll definitely be more effective. Komal, like Basanta just told us, he said about the nutrition angle, Plan has been working on ground for years now. Talking about motivation, obviously, because they are not, I mean, if you really talk about incentives, how do you think we can up that game as well? Sure. So, Ambika, there are 1.3 million ASHA workers in India. That is the single largest female health workforce globally. World Health Assembly in 2022 recognized 6 of our ASHA workers at global platform. I think we are all talking towards the common agenda of building their capacities, and I think just the incentivization will not go a long way. What we need to do is, for example, Matilda is here. She has been ASHA worker since 10 years. ASHA worker program has been in the India since more than 15 years. So what about the ASHA workers who have, been a part of over a decade? What about their career path? So currently, they're in village health committees. A lot of ASHA workers are the secretaries. So they are standing equally among the men workforce, where men are leading the villages. But they still are considered as the most trustworthy task force. So what about building their capacities, training, retraining them, and building a career path for them, which actually they aspire to go from somewhere? सोनू, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा. जब आप अभी बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जब भी आप आशा वर्कर्स के पास गए, उनकी क्या ज़रूरतें थी, उसके बारे में जानकारी मिली. और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि बार बार लोग आते हैं, ज़रूरतें पूछते हैं, लिस्ट बना करके चले जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं. इस ओर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जब हम लोग एक उम्मीद जगाते हैं किसी के पास जाकर कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, चलो हम लोग वापस आते हैं, वो कई बार पीछे से क्योंकि तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं कि सबकी मांग नहीं पूरी हो सकती, और जो ट्रस्ट टूटता है लोगों का, जिसकी ज़रूरत होती है, अगर उसे समय पे नहीं मिली तो उसको कैसे मेंटेन रखा जाए. तो मुझे लगता है कि जो लोकल सिर्फ सरकार के ऊपर ना डिपेंड होकर, जो लोकल लोग भी हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें भी आशा वर्कर्स को एक ऐसा सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए कि अगर किसी को दवाइयों की ज़रूरत है और पीछे से दवाइयों में वक्त लगता है तो हम लोग दवाइयाँ सप्लाई करेंगे. अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत है तो हम लोग आपको ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई करेंगे, या फिर जो भी चीज़ें चाहिए. तो उनको पता है कि ना सिर्फ एक सरकार बल्कि एक इंडिविजुअल, एक ऐसी दुनिया भी हमारे पास है कि हम लोग उनके पास जाएं और वो उनकी जो तकलीफ़ें हैं, वो ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो पाएँ. मैं जैसे बताया कि कोपर गाँव में हम लोग जब काम कर रहे थे, वहाँ पर जितने हम आशा वर्कर से मिले जुड़े, आज भी मैं उनसे जुड़ा हूँ, और आज भी जब कई बार उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए रहती हैं, हमें बुलाते हैं, हम लोग उनको दे देते हैं. और उन्होंने बोला कि मई और आज मई में हम लोगों ने अभियान शुरू किया था, और आज करीबन 6-7 महीने के अंदर उस बेल्ट में कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो उनकी ट्रीटमेंट मिलती है आशा वर्कर्स को और बेहतर मिलती है उन परिवारों से. आई फील वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड सपोर्ट आशा वर्कर्स आल्सो फॉर दैट. I think that issue is really important. Not just depend everything upon the agencies of the government, but indeed bring in some individuals. मावलंकर जी जो बोल रहे थे, एक पूरा एक इकोसिस्टम बने जिसमें स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हों और सिर्फ सरकार से उम्मीद ना करें. एक पूरा एक ऐसा पर्यावरण बने, an environment where this is taken as priority. And where we can build many more ASHA workers and other people come forward and build communities like them, and that will make an impact. हमेशा मैं देखा है कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं हेल्प भी करना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि कहाँ सही जगह पर हेल्प पहुँचेगी या मैं कैसे वहाँ पर हेल्प पहुँचा पाऊँगा. मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान में जो आशा वर्कर्स की पेनिट्रेशन है पूरे देश के अंदर, जो इंटीरियर रूरल एरियाज में, बहुत कमाल की है. कई बार हमने उन जगहों के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन हम मदद पहुँचाते थे तो आशा वर्कर्स के थ्रू पहुँचाते थे. सो मुझे लगता है कि अगर हम आशा वर्कर्स के साथ खड़े हो जाएं, उनके पीछे खड़े हो जाएं, और आशा वर्कर्स को लगे कि हमारे पीछे एक ऐसी फोर्स है जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आवाज़ देंगे. तो मुझे लगता है जो भी इंसान अच्छा करना चाहता है अपने एरिया में, उनको सिर्फ आशा वर्कर्स तक पहुँचना चाहिए एंड हेल्प विल बी डिलीवर्ड. बिल्कुल. वो जो आप बात कर रहे थे ना अभी कि बच्चे जो हैं जब बीमार होते हैं तभी उनको ले जाते हैं, पर ये स्थिति पैदा क्यों हो कि वो बीमार हुए हैं? और अगर इनके पास भी और इसीलिए वो जो आप
जी सरकार की तरफ से या जो भी एक अभियान चले विच इज़ हेल्थ कॉन्शियसनेस, you know, so that rather than wait for the time when the child is going to go to a doctor, you take him. उससे पहले जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े? अगर आप इस प्रोग्राम के तहत अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते रहें कि कौन सी बीमारी है या जो भी वैक्सीनेशन वगैरह लेने हैं उनकी एक जांच होती रहे बार बार, तो बार बार आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप बीमार हैं। अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे का, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वो बताएंगे कि किस तरीके से रैकेट ने एक कार्यक्रम शुरू किया, एक प्रोग्राम शुरू किया ताकि डायरिया से मौत उत्तर प्रदेश में कम हो। ये डायरिया नेट ज़ीरो प्रोग्राम है रैकेट का, उसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे। आलोक। लेकिन I'd like to dive in straight into this discussion क्योंकि ये बहुत ज़रूरी 5-6 मिनट हैं और मैं इन लोगों को समय देना चाहता हूँ जो धरातल पे ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। ये जो किट्स आप देख रहे हैं इनका नाम डायरिया नेट ज़ीरो किट्स है। इसके बारे में अभी स्टूडियो में भी डिस्कशन हो रहा था, लेकिन ये जो वॉलंटियर्स हैं ये दोनों लोग ऐसे लोग हैं जो गांव में जाते हैं और यहाँ पे इन किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं इनको हैंड ओवर करूंगा और ये आपको एक एक चीज़ इस किट्स में दिखाएंगी और बताएंगी कि क्या है। पहले अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम गुंजन सिंह है और मैं जपरौली गांव में काम करती हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माला पाठक है, मैं भी जपरौली विलेज में काम करती हूँ। ठीक है गुंजन जी, पहले आप इसको अनबॉक्स करिए हमारे लिए और बताइए कि इसमें क्या क्या है। सर ये डायरिया नेट ज़ीरो किट है जो हम जो हम गांव में छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर डायरिया हो रहा है तो उनकी माँ को हम ये चीज़ बताते हैं कि इसमें क्या क्या 7 चीज़ें हैं जो दस्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं देने की। जी सर, सबसे पहले इसमें आ जाता है ORS का घोल, जो कि इसमें 2 पैकेट दिया गया है। इसका घोल बनाने का सही तरीका एंड पिलाने का, मतलब बनाने का सेफ रख के पिलाने का सही तरीका हम बच्चे की माँ को बताते हैं कि कैसे बनाना है और घोल कैसे पिलाना है। और सर उसके बाद में ये आ जाएगी जिंक की टेबलेट, जो कि 14 गोली होती है। अगर 2 हफ्ते से 6 हफ्ते का बच्चा, जी बताइए। जी सर, अगर 2 महीने से 6 महीने का बच्चा है तो उसको हम आधी टेबलेट जिंक की माँ के दूध में देंगे, और अगर 6 माह से 5 साल का बच्चा है तो उसको हम 1 टेबलेट देंगे। और बच्चे को कैसे पिलाना है वो भी आप बताएं। यस सर, वो भी हम बताते हैं। और उसके बाद में आ जाएगा हमारा थर्मामीटर, जो कि बच्चे की माँ को बताते हैं कि कैसे उसका टेम्परेचर नापना होता है या कैसे उसके बाद में वो अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं, टेम्परेचर वगैरह। और इसके बाद में आ जाएगा सर डेटॉल साबुन, जो कि डेटॉल साबुन से हाथ मतलब कैसे धुलना है, सही उसका तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उनको बताते हैं कैसे हाथ धुलना है डेटॉल साबुन से। जी, और सर इसके बाद में सैनिटाइज़र आ जाता है, जो सैनिटाइज़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना के बाद में। अगर मान लीजिए कि हम कहीं ट्रैवलिंग में हैं या कहीं और पे हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं धुल सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज़ संक्रमित चीज़ छू रहे हैं सर। जी, अब आप थोड़ा सा और बता दीजिए जो किट्स हैं आपकी। आप जी सर, ये भी वही किट है। जी, आप नीचे रख सकते हैं, नीचे रख दीजिए। जी, ये बुकलेट आप निकाल रही हैं कोई? जी सर, ये बुकलेट है। इसमें हम WHO के 7 प्लान है। इसमें 7 सूत्रीय हैं। इसके माध्यम से हम, मतलब ये हमारे 7 सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं हमें क्या करना है। तो पहला हमारा है डेटॉल से हाथ धुलना, साबुन से हाथ धुलना हमें क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये बताते हैं। दूसरा हमारा है कब कब हमें हाथ धुलना चाहिए, इसकी जानकारी हम देते हैं। तीसरा हमारा है हार्पिक, हमें टॉयलेट को साफ़ रखना है, क्यों साफ़ रखना है, इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये सारे हो गए। हमारा चौथा है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों पीना चाहिए हमें, वो हमारे बताया गया है इसमें। और 5वां है हमारा है माँ का स्तनपान। ये हमारे बच्चे के लिए क्यों, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता उसको मजबूत करता है। और ये हमारा है ORS, इसका हम घोल बनाकर, मतलब इसके बारे में बताया जाता है कि कैसे घोल बनाना है, कैसे पिलाना है और क्या करना है, इसके माध्यम से हम बताते हैं। और ये है हमारी जिंक की गोली। ये 14 गोली होती है जो 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को आधी गोली देनी होती है, और 6 महीने के ऊपर 5 साल के बच्चे को हम 1 गोली दे सकते हैं। और ये हमारा है रोटावायरस का जो वैक्सीनेशन होता है,
इसके हम बच्चे को लगवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके रोकथाम के लिए हम ये रोटावायरस का वैक्सीनेशन करवाते हैं। और हमारा है इसमें एक और भी है जिसे हम बताना चाहते हैं, ये हार्पिक है, जिसमें अब जैसे अभी हमने बताया इसमें 7 पॉइंट प्लान में ये हार्पिक भी आता है। ये हमें टॉयलेट को साफ सफाई कैसे रखना है, क्या करना है, ये हार्पिक के माध्यम से हम बताते हैं कि हमें टॉयलेट को साफ कैसे रखना है, क्या करना है। और ये सर हो गया। और इसमें एक और है जो हम बताना चाहते हैं, ये हमारा है वाउचर फॉलोअप करने के लिए, जो हम फॉलोअप करने जाते हैं, ये हमारा वाउचर है। एक चीज़ मुझे आप बताइए कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप समझा रही हैं, लेकिन जब आप गांव देहात के परिप्रेक्ष्य में जाती हैं तो इसको लोगों को समझाने में क्या आसानी होती है? लोग समझ जाते हैं या थोड़ी मुश्किल होती है? सर मुश्किल तो होती है, लेकिन हम अपने व्यवहार के माध्यम, अपने बिहेवियर के मतलब जैसे हम लोग अपनी भाषा में बात करके माध्यम से उसको समझाते हैं और बताते हैं। और इसमें ये बात सबसे बड़ी होती है, इसमें हमारा फिगर भी बना हुआ है जिसके माध्यम से हम बच्चों को समझाने में या महिलाओं को समझाने में, जो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उनको भी हम बता सकते हैं। तो इसमें जो पिक्चर बनाए इसके माध्यम से उनको समझा सकते हैं। और इसमें हम ये 14 जो बच्चा दस्त से पीड़ित है, अधिक दस्त हो रहा है, उसको हम फॉलोअप कर रहे हैं, ORS जिंक दे रहे हैं। और वो है ये 14 दिन का फॉलोअप है। हम दूसरे दिन जाते हैं, पहले दूसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14 दिन जो होता है उसके लिए हम फॉलोअप करने लेते हैं कि अगर हम जिंक गोली दिए तो वो माँ खिला रही है बच्चे को, नहीं खिला रही, वो इसमें बताया जाता है कि वो टिक लगाए और जितने दिन खिलाती है उससे पूरा टिक लगाती रहे। अगर नहीं लगाती है तो हम समझ जाते हैं या पूछ भी सकते हैं कि वो टिक क्यों नहीं लगाई, फिर खिलाई या भूल गई या फिर छूट गया उसका। इसमें ये पता चलता है कि हाँ ये उन्होंने पूरा अपना कोर्स पूरा किया 14 दिन का गोली जिंक की नहीं। ठीक है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये बात बोल रही थी, पेशेंस बहुत बड़ा वर्च्यू है आप लोगों के लिए, बार बार समझाना पड़ता होगा। हम लोग के जैसे नहीं कि 5 मिनट लाइव नहीं हुआ तो हम लोग शुरू हो गए, क्यों नहीं हुआ, इस टाइप से नहीं, आप लोग को बहुत पेशेंस रखना पड़ता होगा। जी सर, क्योंकि गाँव में हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं, लोग मतलब जानते हैं कि हम हमारे यहाँ आ रही हैं दीदी लोग काम करने, और फिर ये लोग मतलब व्यवहार बन जाता है। और पेशेंट तो होना ही चाहिए सर। वो लोग समझ जाते हैं कि मतलब अगर जिंक और ORS पिला रहे हैं तो जरूर ही फायदा होगा। 2 मिनट का मैं और समय लूंगा। ये एक बेनिफिशियरी है, मेरे ख्याल से ये बच्ची सबसे ज्यादा पेशेंट रही है। आज संडे का दिन है और इसको हम लोगों ने यहाँ खड़ा कर दिया। क्या नाम है इसका? जी शिवानी। कितने साल की है? 11। अच्छा 11 महीने की। आपका नाम? कल्पना। दिक्कत हो रही है कैसे यूज किया? जी सर, कुछ दिक्कत हो रही थी ऑडियो में, तो मैंने कहा कि ये किट जो है ये हमारे पास यहाँ पर भी है, तो हम दर्शकों को दिखा सकते हैं बच्चन साहब। ये वो किट है। और सबसे पहली बात तो लोगों को समझाने के लिए डिब्बे पर रवि काफ़ी मेहनत की हुई दिखती है कि मतलब वो आपको संदेश चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, it's quite a colorful box which says diarrhea net 0. So this is very interesting. So we have the same kit. आलोक जो दिखा रहे थे वो पूरी बुकलेट यहाँ पर है, ऑलमोस्ट लाइक अ शेड्यूल, वैक्सीनेशन शेड्यूल की तरह, किस दिन क्या क्या किया, और बाकी सामान तो यहाँ पर है ही। डिहाइड्रेशन सॉल्ट है, टैबलेट है, डेटॉल सैनिटाइजर है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ रवि, देखिए ये तो एक छोटी सी किट है और आपने दे दी, लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल से आलोक भी चाहें तो पूछ सकते हैं, क्यों बच्चन साहब, कि एक बार ये ख़त्म हो गया तो फिर आप कैसे इंश्योर करेंगे कि लोग दोबारा जाकर के इन सब, अब जैसे ये जिंक की टैबलेट है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये ख़त्म हो जाने के बाद आगे लोग जाकर के खरीदेंगे? So a very interesting question, Sanket. So there are 3 approaches under this program. One is the government health system strengthening. उसमें हम लोग क्या करते हैं, असेंशियल मेडिसिन का जो लिस्ट है, जितना यूपी में हम लोग 13 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि असेंशियल मेडिसिन अवेलेबल हैं क्या नहीं है, और मेकिंग श्योर कि वो मेडिसिन वहाँ पे हों जिसमें जिंक भी है, उसमें ORS भी है, क्योंकि आप बहुत सारी जगह जाते हैं तो ORS और जिंक का अवेलेबिलिटी नहीं होता। अभी मेरे बसंता जी से भी बात हो रही थी, 90% ऑफ डेथ्स जो हैं वो बच्चों की तभी अवर्ट हो जाएंगे अगर आप ORS और जिंक अगर टाइम पे चालू करा देंगे बच्चों को। सेकंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनका रीट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स, और उनको सही रेजीम वो यूज़ करें जो कि WHO प्लान है, और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं प्रिस्क्राइब करें, उसके लिए उनको मोटिवेट करना, ये सेकंड अप्रोच है। और थर्ड है गवर्नमेंट के साथ में काम करना। जैसे हम जानते हैं आनंदीबेन पटेल जी जो कि गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, वो खुद एक टीचर रह चुकी हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो ये प्रोग्राम हमने उनके थ्रू लॉन्च किया है।
और उस पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर डॉक्टर्स जो हैं उनको मोटिवेट करना, उनको रिट्रेन करना, उनके साथ में कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन उनको देना, ताकि जो बेसिक लाइफ सेविंग जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो लोग काम करें फोकस करके, और ऐसा नहीं हो कि वो इतनी हायर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग ये है जो किट जो हमने किया है, ये फर्स्ट टाइम एक किट है जो कि आया है। और ये जो किट है ये एक सेफ स्पेस भी है जहाँ पे आप मेडिसिन को आप सन से और पानी से, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके इस बॉक्स में रख सकते हो, क्योंकि ओआरएस जैसे ही खुलता है उसके बाद में उसमें गांठें बननी चालू हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद में, और सेफ स्पेसेस भी नहीं होती छोटे छोटे घर के अंदर। तो ये एक सेफ स्पेस भी है, और हम काफ़ी जगह ये भी देख रहे हैं कि ये एक गुल्लक भी बन रहा है। जब ये यूज हो जाता है तो जो मदर्स हैं उसको अपना सेविंग के लिए भी पैसा इसके अंदर इकट्ठा करके रख रही है, क्योंकि उनको लगता है कि सेफली इसको यूज कर रहे हैं। लास्ट चीज़ है इसकी एस्थेटिक सेंस। ये जो डब्बा जो डिजाइन हुआ है ये भी मदर्स ने डिजाइन किया है, ये हमने डिजाइनर से डिजाइन नहीं कराया है। उन्हीं के साथ में हमने बेबी बुक और ये सब कुछ डिजाइन कराया है, ताकि हमने पूछा कि आप इसको संभाल के रखेंगी, तो उन्होंने बोला कि जैसे कैल्शियम सैंडोज आता था वो टेडी बियर वाला, वो अभी तक भी हमारे पास में लास्ट 15 साल से है। तो हमने कहा ऐसा क्या चीज होगा जो कि आपको रिमाइंड कराए बार बार कि ये जो ओआरएस और जिंक जरूरी है, WHO 7 पॉइंट प्लान जरूरी है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ बनाते हैं ताकि हमेशा याद रहे। तो वी मेड विद देम, एक्चुअली इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल एक्चुअली। आलोक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जिस महिला से आप बात कर रहे थे अभी कि आपको पता है ये किस तरह से डोज मिलता है, इनको इतना ज्ञान है कि जब वो पदार्थ खत्म हो जाता है तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं से ये सवाल कर लेता हूँ। सॉरी, उस वक्त थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं फिर से आपके पास आऊँगा। जैसे आपको एक बार ये किट में, तो इसमें आपको बताया गया कि भाई ये आपको चाहिए, खत्म हो जाए, बच्चा हुआ हो, सब ठीक। ये हमेशा होता है बच्चन साहब, ये जो NDTV का जो लाल माइक है वो अगर कोई बच्चा रहे तो उसको बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत आकर्षित करता है। ये कई बार हम लोगों के साथ हो चुका है। जितने मरीज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए उसको ताकि हमारा कार्यक्रम जो है वो सफल हो। एक्चुअली हम बात कर रहे थे मदर एंड चाइल्ड की, आशा वर्कर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बसंता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन अभी भी हमारे देश में सोनू जी, आपको पता है कि न्यूट्रिशन, अनीमिया इज़ अ ह्यूज चैलेंज। अनीमिया, भारत की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में की बहुत बड़ी समस्या है। हमने आशा वर्कर्स की ज़रूर बात की कि वो किस तरह, हाउ कैन वी हेल्प देम, लेकिन न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, आपने बांग्लादेश में भी काम किया है, व्हाट कैन वी लर्न, व्हाट कैन इंडिया लर्न एंड इम्बाइब हियर सो दैट वी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ आवर कंट्री? I think this is very, very important. Let me start from Bangladesh, where I worked for more than 4 years. Bangladesh is an engaging society. So every day you will find some engagement and collaborative alliance between government, private sector, civil society, community. So every day something will be happening in the village, in the city, in Dhaka, also in district. The health nutrition movement in Bangladesh, I can say that it is women-led. There will be women self-help groups. Bangladesh is known for that. There is also women volunteer. That is the beauty of beauty of Bangladesh program. There are NGOs. One such NGO is the largest NGO in the world, BRAC. They have more than 100,000 health volunteers. They are named as Swasth. They promote health nutrition messages going to the houses. Also, they sell products. So there are many other organizations, they have such volunteers. I was just discussing with Komal, Plan and Rekit, they have also similar volunteers in the ground, they should be able to tell. And these volunteers with whom I worked in India, they come from hamlets because village approach is somehow redundant and they provide that messages. The fortification thing which you are talking, I was deeply involved with one law in Bangladesh, vitamin A fortification of edible oil. That is the strongest law perhaps in this region, I can say, with strong regulatory enforcement and monitoring. India should learn from that. So this is about Bangladesh. Malnutrition is a silent pandemic. Yes.
And its avatars like low birth weight, anemia, stunting, wasting, obesity, impair body, mind, and spirit. And it has good nutrition, has a power to increase growth, productivity, supercharge demographic dividend. But what has happened somehow, although it is part of our Article 47 in India as part of the Constitution, somehow we have focused more on food, very less on nutrition. So that is why there could be a problem. But at least we are happy that Poshan Abhijan, shaped by the determination of the Prime Minister himself, which was launched by the Prime Minister in 2018, has created a new hope for nutrition fraternity in India. And if we invest on nutrition, then we can realize better health. I think right to nutrition should be more important right as a precondition before realizing right to nutrition. And I have worked in many countries, many places. To me, it is the most simplest and cheapest intervention in the world. You don't require much money. You need to promote awareness. And in India, there are triple A's. There are 3.5 million triple A's, women health and nutrition leaders. One A is ASHA, the other A is Anganwadi worker, the third A is ANM. So if they can really work on Jan Chetana, Jan Sahit, and Jan Andolan, really nutrition problem can be solved. Make it a people's movement, and I think what we were talking about, create more communities of people and learn, like what Bangladesh said, is just volunteers coming out there and helping each one. Yes, yeah, very important. So technology is something that can be used extensively to help our frontline health workers. Here's one called Khushi Baby. Let's go across to Jaipur to see what this app is all about and how it is helping our ASHA workers. Harsha is back. Harsha, it's all yours. Yes, thank you very much. In fact, I have spent a very interesting morning interacting with ASHA workers and ANMs at a place called Sambhar. Now, Sambhar is known more for its salt, and a lot of salt is made in Sambhar, and also a lot of movie shoots have happened here. But actually, on the ground, there's a very, very interesting technological revolution that's happening, and it's happening because of the Khushi Baby app. Now, what is the Khushi Baby app? Before I hand over to these ASHA workers and the ANM behind me, let me just tell you that, earlier ASHA workers spent hours filling in lengthy registers. They would write how many women are in that area, who are pregnant, how many children do they have. But now they can all do it through an app. So let me ask you, Seema, पहले आप बताओ हमको कि आपको ये खुशी बेबी ऐप जो मिला है, इससे आपके काम कितना आसान हुआ है? पहले आप क्या करते थे और अब क्या करते हो? ये जो मेरा नाम सीमा कौर है, मेरे उपकेंद्र का नाम नांदरी है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भी नांदरी है। ये जो खुशी बेबी ऐप जो हमें मिला है, इसके अंदर हमें जो ये ऐप आशा डिजिटल हेल्थ के नाम से प्ले स्टोर के अंदर से हमने इसको डाउनलोड किया, और जैसे कि पहले हम रजिस्टरों से काम करते थे, वही काम अब हम इसके अंदर कर सकते हैं। जब किसी परिवार को हमें जोड़ना होता है तो इसमें जाके जब परिवार जोड़े के अंदर जाके हम जाते हैं, उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डाल के खोजे के अंदर डालते हैं तो सारे परिवार की डिटेल उसके अंदर आ जाती है, और फिर हम उसमें जैसे सभी सदस्यों को चुनना है तो सभी पे क्लिक कर देते हैं और एक एक सदस्य का सारा सर्वे कर देते हैं। और उसमें क्या जानकारी रहती है हर परिवार वालों की? आपकी क्या क्या जानकारी रहती है? हर परिवार वालों, जैसे किसी का आधार नंबर वगैरह, आधार नंबर, जन आधार नंबर, सभी चीज़ें उसके अंदर जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी के घर जाते हैं और आधार नंबर नहीं मिल पाता है तो दोबारा जैसे ही हम जाते हैं तो इसको ऐप को खोल के, परिवार को खोल के वापस उस आधार या जन आधार को वापस से हम जोड़ सकते हैं, जो कि पहले हमें असमर्थ होता था, जाते थे तो भी रजिस्टर साथ रखने पड़ते थे, अब इसी में जोड़ देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या जानकारी रहती है इस ऐप? स्वास्थ्य संबंधी के अंदर हम जैसे हमें घर घर हम लोग विजिट करते हैं तो हमें उसमें एक तो गर्भवती को पता चलता है तो हम इसमें इनरोल कर लेते हैं। एक बच्चों का टीकाकरण, जैसे कमजोर बच्चे हैं उनके बारे में भी इसमें पूरी मिल जाती है। हम जो पूरा रिकॉर्ड करते हैं वो इसमें डाल लेते हैं, तो हमें आगे के लिए सुविधा नहीं, पढ़ने नहीं पलटने पड़ते रजिस्टरों के। हम एक ही टैब से हम पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। ये हमें बहुत फायदा हुआ है। आप थोड़ा सा कुछ दिखा सकते हैं क्या हमको इस ऐप में? हाँ, इसमें कैमरा की तरफ मोड़ के देखिए। जैसे ये परिवार जोड़ा ऐप है, तो इस परिवार जोड़े में हम लोग जैसे हमें ये दे रखे हैं इन्होंने ऑप्शन, तो इसमें हम किसी भी जन आधार या बिना खोजे जोड़े नाम डाल के हम इसमें सहमति से हम उसका पूरा रिकॉर्ड ले लेते हैं। फिर इसको जोड़ने के बाद में परिवार जोड़े ऐप आता है एक,
इसमें परिवार जोड़े हैं इसके अंदर, तो इसमें जैसे विजिट आ गई तो वो जैसे परिवार विजिट में इसमें जोड़ लिया तो परिवार विजिट में आ जाता है। वो परिवार विजिट में डालने के बाद में हमें उसमें उसका पूरा रिकॉर्ड डाल देते हैं कि जैसे उसके आधार, जन आधार, उसके और परिवार में जितने सदस्य हैं उनका सबका रिकॉर्ड हो जाता है। हमें कभी दिक्कत होती है हम लाभार्थी का नाम डाल के उसमें, और उसमें जैसे हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है नाम डाल देते हैं, वो सब उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है। You know, they've been doing this across Rajasthan, but they've had a very, very successful implementation program in Udaipur also, where there is a very large, significant tribal population that actually suffers a lot from malnourishment and also from problems like anemia. Now, there is also, apart from the Khushi Baby Asha app, there is also the ANM app. And I have with me Bhavri Chahar, and she's going to say, Bhavri, आप बताओ मेरे को कि आपको जब आप आशा वर्कर तो ग्राउंड पे जाके काम करती हैं, फिर अल्टीमेटली जैसे जो मेडिकल इंटरवेंशन करना है रूरल प्राइमरी हेल्थ लेवल पे वो आप करोगे, आपको ऐप कैसे हेल्प करता है? मुझे हेल्प ऐसे करता है ऐप कि मैं जैसे कोई आशा से मेरा संपर्क नहीं हो पाता है, उसमें कोई गर्भवती महिला पंजीकृत हो चुकी है, उसकी सेकंड जांच के लिए अगर उसको आना है तो वो मुझे ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। थर्ड, सेकंड, फोर्थ जैसे भी जांचें होती हैं, या कोई बच्चा टीके के लिए छूट गया है तो उसको मैं ऐप के माध्यम से पता लगा लेती हूँ। गाँव में जो जनसंख्या है उसमें ऐप से ये पता चल जाता है कि ये मान लो मेरी जनसंख्या है, इसमें कितने लोगों का सर्वे हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है, ये सब कुछ इसमें पता चलता है मुझे। वापस दिखाइए जी। ये देखिए, ये जनसंख्या है और इसमें ये सर्वे हुए लोगों का पता चलता है। जिनका नहीं हुआ है उनको मैं आशा को बोलती हूँ कि आप इनका भी सर्वे करें, इसको जल्दी से जल्दी जोड़ें। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको हमें 12 सप्ताह के अंदर अंदर उसको लेना होता है कि आप आओ, हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं, 12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण होगा तब उसको सारे लाभ मिल पाते हैं। तो अगर कोई छूट जाता है आपको ऐप के जरिए पता चल जाता है इसमें। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं, बस एक क्लिक से सारा कुछ पता करो जी। अगर आशा से संपर्क नहीं हो पाता है तो हम वहाँ एक जगह बैठकर उनको लोगों को भी बुला सकते हैं, आशा को भी बताते हैं, कोई चीज़ आशा से छूट जाती है, कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, तो इस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं। ये ऐप हमारे लिए मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ हो गया, पन्नों वाला काम नहीं है, कंप्लीट काम फोन में है। ओके, सो हेल्थ केयर वन क्लिक अवे विद द खुशी बेबी ऐप। जी जी। All right, Harsha, many thanks for joining us. That was Harsha Kumari Singh with the Khushi app. Yeah, live demonstration. Okay, thank you very much to all our guests. Maybe you would want to thank them. Thank you so much, Matilda Kullu, Basantakar, Ravi Bhatnagar, Dr. Komal Goswami. Ravi is going to be joining us again, and Sonu Sood. Thank you all so much for joining us. And we also have Ugen Bhutia. He is now right here. Ugen, I believe you have traveled all the way. Where have you come from? From Sikkim. Sikkim. Yeah. I mean, this is dedication and passion. We were talking about music being a healer, a motivator, and something which is great for the health. But for musicians, what do you think is your biggest challenge as far as mental health is concerned? Right. I mean, I was exactly about to talk about the mental health because जब health की बात होती है तो people are, you know, like ज़्यादातर physical health में ही focus होता है, but मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा feel होता है कि being an artist, like it's really hard to maintain that mental health, क्योंकि most of the time I feel like मेरे जैसे artists है, बहुत सारे artists, we feel like हम लोग ज़्यादातर, you know, under the surface रहते हैं and लोगों को ये पता नहीं होता है because we don't show it. तो आई थिंक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस चीज़ में, एंड मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिसको मैं जानता हूँ जिसने म्यूज़िक करने के बाद आई फील लाइक मेंटल हेल्थ से काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट मिला है उनको, तो आई फील लाइक म्यूज़िक रियली हेल्प्स अ लॉट। ओके ना, आप एक रैपर हैं जी, यही माध्यम क्यों चुना आपने? हाँ जी। Why did you only want to become a rapper? I feel like रैप में मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता सकते हो जी, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि it has like lots of dynamic as far as to express करने के मामले में as compared to the other genre. No offense to other genre, but yeah, I mean hip hop में मेरे को ऐसा लगता है कि you can express a lot. Yeah, a lot of times, you know, in the rap, कोई social issue हो, कोई समाज के बारे में बात करनी हो, and they're able to express themselves through the words that they create, and it's so rapid, and it's so quick, it gets to you. and it immediately it gets to you. Yeah, it's wonderful.
How do you construct your own scripts? Again, do you write them yourself? Or Why don't you come a little closer? Yeah, please. Can I? Yeah, please. सर मैं ज़्यादातर अपने पर्सनल लाइफ में जो भी मेरे साथ होता है उसके बारे में मैं जी लिखने का कोशिश करता हूँ एंड स्पेशली जब मैं व्हेन आई कम फ्रॉम द वंस कॉर्नर ऑफ द इंडिया है ना नॉर्थ ईस्ट से जब मैं आता हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं जो एक गैप जो है हमारे और जी हमारे और द अदर साइड ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स तो मेरे को लगता है हम लोग बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग फ्रॉम द मीडिया फर्टिनिटी आई फील लाइक हम लोग इस गैप को थोड़ा कम कर सकते हैं एंड यही मकसद है मेरा एंड जस्ट टू रिप्रेजेंट आवर कम्युनिटी एंड रिप्रेजेंट माय पीपल एंड रिप्रेजेंट माय रीजन दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू Lovely. I can't wait to hear your performance. Thank you so much. Thank you so much. And it's an honor to perform in front of like Mr. Bachchan sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes. All right. Check. Yeah. Yeah. Bahari. You want B? Hey. Calzo. There we go. Hey. दिल्ली की गली से निकली मेरी बात अकेले ही चलाना है कोई मेरे साथ इन गलियों में ही गुजारी मैंने लंबी रात अभी आगे बढ़ने के बड़े मेरे जज्बात संगीत मेरी नस में संगीत मेरे दिमाग में रहता हूँ हर वक्त कुछ करने की फिराक में पार्ट्स मेरे गर्म जैसे दिल्ली की गर्मी लोग मुझे सुन के जले जैसे पूरी तले आग में मैं बोलूं मैंने पाली शान से बीट गोर खा के बलिदान के सम्मान में आगे बढ़ता चलूं मैं ये ठान के मेहनत करूंगा रोज आया हूं मैं मान के और नॉर्थ ईस्ट साइड का अलग ही स्वैग है ब्लैक स्नैप बैक बड़े ट्रैक मेरे बैग में मसाले कम लेकिन स्वाद है अपने खाने में डीजे वाले बाबू भी नाचेंगे अपने गाने में आता मुझे गाना क्लब को नचाना हर बंदा बनता शाना तो फिर हम भी क्या कम है अभी तो मैं आया लौट के नहीं जाना सबको है बताना बेटा हम भी क्या कम है आता मुझे गाना क्लब को नचाना हर बंदा बनता शाना तो फिर हम भी क्या कम है अभी तो मैं आया लौट के नहीं जाना सबको है बताना बेटा हम भी क्या कम है मैं नहीं चीनी खाता हूँ नमक देश का गधे की भीड़ में एक घोड़ा मैं हूँ रेस का भागना दौड़ना चलता रहेगा मैं ना कभी होना स्टॉप बना के बिट में डाल के हिट में गाना करता मैं ड्रॉप क्योंकि फुल स्पीड में चलेगी अपनी गाड़ी अब अपनी बारी अब चलेंगे सब पहाड़ी अब चीर के निकलेंगे पहाड़ों से गंगा मेरे पीछे साथ है मेरी पहाड़ी जनता ये तो बस है एक इंट्रो उठाना है पूरे पहाड़ी हिप हॉप सीन को काफी दिनों से बेटा बैठा था मैं ऑफलाइन तभी सब पूछते हैं हाउ यू बीन ब्रो वैसे तो हिंदी में नहीं करता रैप में तो कैसे आया फिर तू इंडिया के मैप में पीछे सारे लोग मुझे न जाने में कौन डेनी डेंचोंपा को जरा लगा दे तू फोन आता मुझे गाना क्लब को नचाना हर बंदा बनता शाना तो फिर हम भी क्या कम है अभी तो मैं आया लौट के नहीं जाना सबको है बताना बेटा हम भी क्या कम है आता मुझे गाना क्लब को नचाना हर बंदा बनता शाना तो फिर हम भी क्या कम है अभी तो मैं आया लौट के नहीं जाना सबको है बताना बेटा हम भी क्या कम है Thank you. So, the next one. Alright, the next song is called सब कुछ सही है and मेरे को लगता है कि no matter जितने भी गैप है अपने बीच में but फिर भी मेरे को लगता है कि बहुत वो गैप कम हो गया है and I feel like आजकल सब कुछ सही है लोग हमें जानने लगे हैं है ना आजकल सब कुछ सही है लोग हमको अपना मानने लगे हैं so yeah. Yeah. Hey. पर आजकल सब कुछ सही है लोग हमें जानने लगे हैं आजकल सब कुछ सही है लोग अपना मानने लगे हैं या तुझे दिखे लड़की दो आंखें सेकता मुझे दिखे यहाँ निकता मैं एकता देखता मुझे अलग नजर से तू मजबूर हूँ मैं जो हूँ मैं घर से दूर
और खाली खून न डरता मैं प्राण खोने से मर्दानी नहीं जाती है बेटा रोने से अब मुझको तोलना नहीं तेरे नजरों से देख आज रॉक स्टार निकला है देश के एक कोने से उत्तर पूर्व प्रश्न चिन्ह तेरे फेस पे अब फिर भी देखो नाज है मुझे अपने देश पे रखूं नाम जैसे मैं अब्दुल कलाम कर काम ऐसा जो लोग तुझे ठोके सलाम ये सारा का सारा किरदार का है झोलो बॉलीवुड जो दे मुझे चौकीदार का रोल एंड I'm just loving it the way you look at me bro I'm like भाचन भुटिया मैं मारो सीधा गोल पर आजकल सब कुछ सही है लोग हमें जानने लगे हैं आजकल सब कुछ सही है लोग अपना मानने लगे हैं आजकल सब कुछ सही है लोग हमें जानने लगे हैं आजकल सब कुछ सही है लोग अपना मानने लगे हैं लोग मुझे अपना मैं कह दूं खुल के तेरे सीन में नहीं आना है 8 साल से जो करी मेहनत बनेगा सीन खुद ही किसी का छीन के नहीं खाना है आगे ही जाना है हाँ जी दिल से ही गाना है कासो गैंग मेरे फैंस बाकी जाली ये जमाना है गरीबी बहुत देखी है मैंने अभी तक बैंक बैलेंस पट जाए मुझे इतना कमाना है घर हो या लाइफ दोनों को सजाना है उसे भी प्यार जिसने हमको अपना नहीं माना है नॉर्थ ईस्ट मेरा एक परिवार हम भी क्या कम है ये सबको बताना है मैं दिल से करूँ प्यार मैं तो लिखूं गाने हर बार मैं तो निकला हूँ देखो घर से जितने को संसार में तो पर आजकल सब कुछ सही है लोग हमें जानने लगे हैं आजकल सब कुछ सही है लोग अपना मानने लगे हैं पर आजकल सब कुछ सही है लोग हमें जानने लगे हैं आजकल सब कुछ सही है लोग अपना मानने लगे हैं थैंक यू So this song is a Nepali song. I hope you guys gonna like it. Hey, hey, hey. कसैले भन्दैमा रिसले मरि गए चिप्लेर झन्डैमा जिन्दगी यस्तै हो या हो मेरो कर्मको फल सकिँदै जाँदैछ मेरो जोस नहुन सक्ने सफल बिग्रिन्छु भनी मनी अरूको कुरालाई सुनेर लुकेर बसिरहेछु सबै ढोका थुनेर सुन ब्रो I'm getting broke के गर्नु पर्ने हो खै I don't know चारैपट्टिबाट दैलो पनि बन्द हो घरबाट पनि प्रेसर आउन थाल्यो हो You know I'm famous but I ain't got no money तिमीलाई पनि यो कुरा थाहै छ नि जति पैसा थियो सबै भिडियोमा हाले कन्या जस्तो हुन्न रहेछ मैले बुझ्न थाले तर आज सुतिसक्यो होला संसार सारा म अनि माथि चम्किला यी तारा आकाश हेर्दै बिर्सी गए कुरा सबै The whole industry don't know me, I'm just free, I just wanna be myself. Everybody want me to make a hit, I don't fit in this game, I just wanna be myself. यस्तो पाराले कसरी अघि बढ्छस् सबै माथि चढ्दै जाँदैछ त तल झर्छस् त भन्दा ढिलो अघि बढ्नेहरू त सँगै पर्नेहरू आज हेर कता छ तिम्रो कुरा सुनि मेरो मन मर्यो यो कलाकारी मलाई धेरै महँगो पर्यो But I just wanna stay strong, just hold my hand